चलें, ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो पहले मैंने एक एग्जांपल ले ली, जस्ट एन एग्जांपल कि भाई होता क्या है composite function. So you just plug one function into the other, ठीक है, and you call that a composite function, a single function composed of two functions, ठीक है। अच्छा, हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे f लिखा हुआ है ना, f, तो this I will call this as my outer function, ठीक है, and the function that is to be substituted, I'm going to say that ये मेरा क्या है, ये मेरा inner function, ठीक है। तो मैं यही अब लैंग्वेज यूज करूंगा, ठीक है। That's the language I'm going to use. Chat पे कुछ है मेरे पास। Sir, you're still unmuted on Zoom. Am I unmuted? No, I'm not unmuted. I'm fine. But that was old. Okay, no worries. I'm just checking if everyone is here. Okay, just check that if everyone is here. All 13 people are here. I just want all of you to be here. Okay, you can share this with your other classes as well. Okay, in case they need help in composite functions. अच्छा भाई, so outer और inner की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो सबसे पहले ना हम लोग चुपचाप करके बैठ जाते हैं, एक चीज डायरेक्टली। अच्छा, और कुछ मुझे नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो इनर का डोमेन होगा ना, इनर का डोमेन, ये एक चीज हमने एस्टैब्लिश कर लिया, डोमेन ऑफ इनर फंक्शन इज द डिसाइडिंग फैक्टर, इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब कि जो इनर फंक्शन का डोमेन होगा ना, उससे बाहर हम मर के भी नहीं जा सकते। फॉर अ कॉम्पोजिट फंक्शन वी कैन नॉट गो आउट of the domain of inner function, ठीक है। So for example, let's discuss one thing. If inner function है आपका, inner function का domain है, inner function का domain, inner function domain, ठीक है। example ले लेते हैं, ठीक है। x से -1 से लेकर 5 तक, this is the domain of inner function. Now the domain of the composite function cannot go out of this, ठीक है। इससे बाहर वो जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें इससे बाहर नहीं जाएंगे। सो दैट मीन्स कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन है वो ये हो सकता है, इतना सा हो सकता है, फॉर एग्जांपल -1 से लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ 0 तक आ जाए, -1 से लेकर 0 तक एक्सेप्टेबल है ये क्या है, एक्सेप्टेबल डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट, एक्सेप्टेबल डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल आ गया आपके पास 0 से लेकर 3 तक आ गया, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दैट्स ऑल्सो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपका एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। एक और डोमेन कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर डोमेन। ये मैंने कर दिया -2 से लेकर 4 तक, ये हो गया अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल हो गया। ये क्यों अनएक्सेप्टेबल हो गया बेटा, बिकॉज दिस इज योर गेम, इससे बाहर नहीं जा सकते, दिस इज योर बाउंड्री, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। एवरीथिंग स्टेज विद इन दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, कैन वी एस्टैब्लिश दिस, हैज दिस बीन एस्टैब्लिश्ड, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द इनर फंक्शन डोमेन, द composite function cannot go out of this, जी भाई। सो फार सो गुड, Yes, sir. ठीक हो गया, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, नाउ हम थोड़ी सी बात करते हैं वापस। फॉर एग्जांपल आई हैव f ऑफ g ऑफ x, दिस इज व्हाट आई हैव, ठीक है। तो दिस ये मेरा आउटर है, एंड देन आई हैव इनर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली f ऑफ x नॉर्मल ऐसे होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, f Yes, ऑफ sir. x नॉर्मली ऐसा होता है। सो व्हाट वी डू, हम इसके x की जगह पर gx उठा के रख देते हैं, बेसिकली इनर फंक्शन उठा के रख देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आउटर के डोमेन पे,
आउटर के डोमेन की जगह पर कौन आके बैठ जाता है, ठेकेदारी कौन ले लेता है, इनर फंक्शन आके ले लेता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी यूज दिस, हाउ कैन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड if you have domain of outer function, let's say x greater than some value, let's say a, let's say, ठीक है। So because of this, the outer function, which is inner function, which is the g of x, can be replaced by x, ठीक है। x can be replaced by g of x in the domain of f of x, ठीक है। ये आपका डोमेन f of x को, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके हम 3-4 सवाल करेंगे यार, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच ऑफ दैट्स आवर फर्स्ट अप्रोच, जिसके सवालात आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से हमने एस्टैब्लिश क्या किया है कि इनर फंक्शन को उठाकर आप प्लेस कर सकते हैं आउटर की डोमेन की जगह पर, ठीक है। ये बात मुझे बता दें, एस्टैब्लिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, इसमें खास तौर पे इसका सवाल आता है, कुछ भी कर लें इसका सवाल आएगा। आई थिंक इवन मॉक में भी आया था। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी विद दिस, आई एम वेटिंग। अब्दुल्ला भाई, अहमद, अब्दुल्ला, आमना, Yes, राफे, sir. हिबा, असना, आपकी Yes. बाकी दोस्त कहाँ हैं? वेयर इज मनाल? नो, अहमद, नहीं नॉट अहमद, लेट मी, इजान का है, इजान का है भाई। एनीवेज, इज दिस क्लियर? सो फार सो गुड? Yes, sir. Yes, sir. अब हम ना इस एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल करेंगे, मैंने इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे सवालात निकाले, ठीक है। वी गोना डू दोस। चलो, द फंक्शन f is defined by f of x 3x plus 1. रीड द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन रीड करें। चलो, the function f is defined by f of x 3x plus 1 for x less than or equal to a, where a is a constant. The function g is defined by g of x minus 1 minus x whole square for x less than equals to minus 1. अब देखें यहाँ f भी मेंशन हो गया, g भी मेंशन हो गया। You have to be very careful about this. आपने सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, आउटर इनर देखना है। तो let's read the question, ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। Find the largest value of a for which the composite function gf can be formed. जब भी इस तरह का सवाल होगा तो हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट टाइप सीखा है हम वो सीखेंगे, ठीक है। सो gf मैंने लिख दिया पहले, इसमें ये आपका क्या है, ये आउटर है, ये आपका क्या है, ये आपका इनर है। तो इनर को उठा के यू कैन कीप, इनर को उठा के आउटर के डोमेन पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आउटर का डोमेन क्या है, आउटर का डोमेन क्या है भाई, आउटर का डोमेन है x लेस देन इक्वल्स टू -1। अब जो ये -x है ना, ये वाला x, बिकॉज ऑफ दिस मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूं अब, f। जिस तरह मेरा g ऑफ x की जगह, इसके x की जगह f सब्स्टिट्यूट हो गया, सिमिलरली डोमेन में भी जहां पर x होगा वहां पे मैं f लिख दूंगा। सो माय f इज एक्चुअली 3x plus 1, so 3x less than equals to -2, x less than equals to -2 upon 3. So now this can be compared with this. So my largest value of a, largest value पूछिए, my largest value would be -2 upon 3, largest. Any question? Any question? No, sir. Abdullah, I want you to answer it. वरना मैं remove कर दूंगा आपको। I want to know if you guys are there or not, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, मैं सुबह 5-6 बजे का निकला हूँ। क्या Abdullah, Seth, what about you? Mohammad Ayan, Rafi, how's your game going? कितना हार गए चेस में? जी चलें, सर। क्वेश्चन। वाह, क्या बात है, कौन बोला, गूंगा बोला, कौन गूंगा? राफे, हाउ आर यू राफे? गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अब हाँ, ये देखा मैंने, राफे को थोड़ी सी इज्जत दी ना, अब्दुल्ला मदानी जेलस हो गई, सर मैं भी हूँ, सर आई एम हियर,
ठीक है, I know you are here, that's good. What about Saif and Mohammad Ayan? I'm here. I'm here as well. क्या बात है भाई. And हिबा भाई आवाज आ जाए. हिबा ये आप ये ना पता है कि नहीं, आप ये बताएं जो मैंने जितना अभी तक समझाया ये क्लियर है कि नहीं? हिबा. Sir, Yeah, जी. sir, it's clear. That's really good. जी भाई जी. I think Daniel Qureshi is in the waiting room. Oh, let me check. Yeah, he is. भाई कैप्टन आ गया. दानियल कुरैशी कैप्टन है. कैप्टन है यार भाई. सब दानियल कुरैशी को सलाम करें. आ गए ना. बेहतरीन तो सलाम करें. कैप्टन है यार. चलिए, let's get back to the questions now. The function f is such that f of x is 2x plus 3. f of x is equals to 2x plus 3. इसका डोमेन आ गया है x greater than equals to 0. The function g is such that gx equals ax squared plus b for x less than equals to q. So g of x जो है बेटा, that is ax squared plus b for x less than equals to q, where a, b and q are constants. The function f g is such that, so basically composite function उन्होंने दे दिया हमें already. f g is such that for x less than equals to q. ठीक हो गया? ये मसले वाली बात नहीं है. ठीक है. So f g x निकाल लेते हैं. Let's find f g x. So f of g of x would simply be g x को उठा के मैंने plug in कर देना. So 2 ax squared plus b plus 3. So 2ax squared plus 2b plus 3. Now this is equals to something which has already been given by the examiner, which is 6x squared negative 21. I just need to compare. ठीक है. So x squared, थोड़ा सा ना मैं स्पेस बचाऊं, आगे वर्किंग मुझे करनी है कॉम्पोजिट के लिए. ठीक है. So 2a can be compared with 6. a यहाँ से आ गया 3. And similarly this is the constant. ये आपका constant है. ठीक है. So this can directly be compared by this negative 21. ठीक है. So 2b plus 3 equals negative 21. So b will be negative 24 by 2, that is negative 12. So our g of x actually can be written g of x is now 3x squared negative 12 for x less than equals to q. Now composite function क्या है बेटा? f of g of x, and they have already chosen the domain which is the domain of inner function. ठीक है. Even the examiner knows. That's good. ठीक है. So now part 2, find the greatest possible value of q. ठीक है. Now this is the same type जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. Same particular single type जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. Alright. Now so अब क्या करेंगे? आउटर है, इनर है. ठीक है. इनर को उठा के रख देंगे आउटर के डोमेन पे. आउटर के डोमेन पे रख दें. ठीक है. सो नाउ आउटर का डोमेन क्या है? आउटर इज f and f is x greater than equals to 0. आउटर का डोमेन इज x greater than equals to 0. इस वाले x की जगह पर I need to plug in inner function. ठीक है. inner मेरा gx है, which is 3x squared negative 12. So now what will I do? This is quadratic inequality. We can also, we're also revising that now. ठीक है. So मैं क्या करूंगा? 3 कॉमन ले लिया. So x squared negative 4 greater than equals to 0. a squared minus b squared लगेगा x minus 2, x plus 2. So now my values would be, the roots would be, and greater than equals to 0, this will be my shading area. So x less than equals to negative 2 and x greater than equals to 2. ठीक है. Now I want the greatest possible value of q, and the type of domain that has been chosen is the less one. ठीक है. lesser one. तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हम क्या कर देंगे? ये वाला हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमें दिया गया है वो दिया गया x लेस देन इक्वल्स टू q. सो q की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई? नेगेटिव 2. ऑल गुड? ऑल गुड भाई? Wait, sir. Yeah. सैफ ठीक है. ठीक है. Now Wait, this is a big question. I will not be doing the entire question. मैं सिर्फ क्या क्वेश्चन करूंगा? I think part 4 करूंगा. I will only do part 4. sir. Okay? Because it can जी बोले.
So could you go to the previous question? Yeah. So doesn't it have to be greater than 0? So how come we're taking the negative value? Greater than 0, it's for f of x. We are Sure. finding for this one. That's why. वो f of x के लिए, ठीक है? ठीक हो गया. चलो. Express to, अच्छा इनके ना मैं आपको answers already बता देता हूँ. I have their answers ताकि हम लोग डायरेक्ट मेन चीज पे फोकस कर सकें. ठीक है? चैट तो कोई चैट तो नहीं आएगी भाई. That's number. अच्छा ठीक है. Wanted to join. I'll let Ayan KGS in. Now he's missed a lot of. अच्छा let's see. अभी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. In case anyone new is joining, do let me know so that I can revise for them. Okay. In case anyone new is joining, just like Ayan just joined, so I'll revise a little bit now. Okay. We're still at the first type of question. Anyway, so let me give you the answers for this big question because हम लोग पूरा सवाल नहीं करेंगे. We're only focusing on the part जहाँ पर आपके पास domain and range of composite function. How many minutes are left for the session? Why couldn't join? Doesn't find it. When will I take query? मतलब I think there are 4 more questions and then I'll take queries. आप queries मुझे पहले से भेज दें, ठीक है? WhatsApp में the queries पहले से भेज कर. All right, now I'm at question 5. So the answer to part 1 is I need to change the state the largest value to constant. Let's इसको change कर लेते हैं. So the answer to this is simply yeah. So 2x minus 3 whole squared -7. ठीक है? State the largest value of constant k for which f is a 1-to-1 function. ये हमारा turning point से हमें पता चल जाता है, right? So largest value of k is 3. K is 3. X coordinate of turning point से पता चल जाता है for 1-to-1. We know this. Part 3 I don't need to do. Yeah, this is from where I will be doing. यहाँ से मैं सवाल कर रहा हूँ. I'm doing this question from here now. ठीक है? The function g is defined by g of x. So g of x equals x plus 3. Its domain is unknown. ठीक है? With k now taking the value of 1. K now taking the value of 1. That means कि जो आपके पास f of x था, which was 2x minus 3 whole square -7. इसका जो domain है, that is now, previously it was less than equals to k, it's now less than equals to 1. ठीक है? Yeah. Find the largest value of the constant p which allows the composite function fg to be formed. Again, it's the same thing that we've been doing. जो हम पहले किया. तो now हमने क्या याद करना है? f of g of x दिया हुआ है. हमने करना है भाई inner outer. ठीक है? So this one is what our outer function. ठीक है? ये हमारा outer है. ये outer है. तो outer का domain use होगा और ये हमारा inner है. Inner को उठा के कहाँ रखना है? Outer के domain पे. Whenever such a question will come, inner को उठा के रखना है outer के domain पे. तो outer आपका f वाला है, ये रहा outer का domain. outer function का domain ये रहा. इसका जहां पर आपके पास x होगा, जहां पर इसका x मौजूद है, ये this function, ठीक है? ये जो x है आपका, इसकी जगह I need to plug in g of x because of this composite function. So ये हो जाएगा g of x less than equals to 1. My g of x is x plus 3 less than equals to 1. X less than equals -3 plus 1 is -2. Now this is actually, मुझे actual में क्या given था? X less than equals to p given था. X less than equals to p. So my greatest value for p is -2, largest value. Any questions? Ayan, I know, I think you just joined the class. I don't know if you understood this because we first discussed all of this. So in case you did not understand, you need to let me know, okay? You can use the chat to let me know. All right. Anyone else who needs help? So we have another Mahadesh back. So Ayan, I'm waiting for your reply in case you need help. I'll wait for another 5 seconds. Okay, that's good. So we have another question. Why don't you guys give it a go? इसके मैं आंसर दे देता हूँ जो बाकी पार्ट्स हैं so that टाइम जाया ना हमारा. This is question 12.
All of. So the answers to part 1 is 2 x plus 3 whole square negative 7. Next, inverse की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी करने की. We don't need the answers to part B. We don't need any of this. We don't need any of this. We don't need any of this as well. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. State, हाँ अब आ जाए. Read this and then do part B. ठीक है. मैं लिख देता हूँ. F of x you have as 2x plus 3 whole square negative 7 with domain less than equals to negative 4. State the largest value of k for the composition fg to be formed. fg बनाना है. ठीक है. So based on that, you need to know कि x less than equals to k पे जो k की value होगी ना वो क्या होगी. Yeah. So tell me. Outer. This is your inner. All right, I'm waiting for the answers to part D. ठीक है, I'm waiting for that. Part D का आंसर मुझे बता. So is it minus 1/2? I want Hiba. Hello, Daniel. All right. So चलो मैं ही कर दूं फिर. Just only one question. One student gave me the answer. ठीक है. I think it was Ayan. Anyways, so जो हमने सीखा है हम उसी को फॉलो करते हैं. आउटर के डोमेन पे which is x less than equals to negative 4. ये आपका आउटर का डोमेन है. इसको उठा के प्लग इन कर देंगे हम यहाँ पर. g of x which is 2x negative 3 negative 4. So 2x negative 1 x less than equals to negative 1/2. Also, we've done quite a lot of questions. चल, now अब हम आएंगे second चीज. चल, before going to the second चीज, let's first discuss the second चीज. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. इनर फंक्शन आउटर फंक्शन सारा डिस्कस हो गया आपका. ठीक है. अच्छा, सेकंड एजेंडा. सेकंड एजेंडा बहुत बेसिक है आपका, शदीद बेसिक में. ठीक है. क्या बेसिक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ f of x domain given, find range. What will you do? Find range. What will you do? पता है. मैं कह रहा हूँ domain given है. Plug in the domain and then find the range. Exactly. Use domain. अच्छा, यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा. With carefully noticing the type of function. ठीक है. Use domain values to find range. That's the most basic thing. ठीक है. That's the most basic thing for any function. तो अगर मैं बोलूं fg का डोमेन दे दूं और बोलूं fg की रेंज ढूंढने, तो won't that should be quite easy, right? Because हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अगर किसी की रेंज ढूंढनी है तो the most basic thing to do is to use its domain. First figure out the domain. If you have figured that out, फिर आप you should know what type of function is that, because obviously turning points वगैरह देखने होते हैं. ठीक है. But you have to use the domain to get to range. ठीक है. So similarly, now we're going to try the same thing over here now. चलो, this is the question. ठीक है. ध्यान क्या रखना, पहली चीज इस सवाल में डोमेन दे दिया उसने, दोनों का डोमेन दे दिया. x belongs to real numbers. ठीक है. x belongs to real numbers. Now give it a go. Only do part 3. You don't need answers for any of the parts. Just directly do part 3. छोड़ें इसको, छोड़ें. Just do part 3. अभी सामने ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया आपको. ठीक है, कि किस तरह सवाल पूछा जा सकता है. This is the second type. कोई है तो नहीं बाहर? Everyone is here. All right. तो जब तक आप लोग ये कर रहे हैं मैं क्वेरीज निकाल लूं. क्वेरीज.
Take 1 minute and then let me know. पहले एफ जी एक्स साथ साथ में एफ जी एक्स पर वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। एफ जी एक्स का वो निकाल लेते हैं, फंक्शन किस तरह दिखेगा एफ जी एक्स। लेट्स डू दिस। सो माय एफ जी एक्स वुड लुक लाइक दिस, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट वुड लुक लाइक दिस, जी ऑफ एक्स, ठीक है, 1/2 4 plus x negative 1/2 x squared minus 2, ठीक है। So now once we simplify we get 2 plus half x negative 1/4 x squared negative 2, negative 2 will cancel each other. I think मैंने काफी बड़ा बड़ा लिख दिया, इसमें थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। So now this 2 and this 2 will cancel out each other. So I have f of g as negative 1/4 x squared plus 1/2x. Now since we know the domain, कि जो इसका domain है, that is x belongs to real number, that means inner function जो g है इसका भी domain x belongs to real number है, x belongs to real number, hence composite function का domain भी क्या होगा, belongs to real number. So now we know the domain. How can we find the range? मैंने क्या लिखा था पीछे? You should know what type of function you are handling. So the type of function we are handling is quadratic function जिसमें turning point का problem आ जाता है. So what we need to figure out right now is the turning point. Turning point ढूंढने, because if this is how the function will look like, the range would be this, greater than the y coordinate of turning point. Okay. So let me know the turning point. Hurry up. All right, I'll do this. The most easy method to figure out the turning point right now would be completing square पे मैं नहीं जा रहा because I have fractions, I might make mistakes. I will simply find the roots and take its midpoint. ठीक है? Or I can use the calculator to find the roots. Can somebody tell me the roots for this? Use a calculator to find the roots या मैं खुद ढूंढ लूं? चलो मैं ढूंढ लेता हूँ रूट्स इसकी, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 4 and 0. 4 and 0? That's what I'm getting. Let me check. Let me see. 0 is equals to negative 1/4x squared plus 1/2x. So negative 1/4x common ले लेते हैं. X minus 1 upon, what will I have? I'll be left with 2, right? Equals 0. So from here I'm getting x equals 0 and x equals 2. These are my roots. I want to find the midpoint of this. The midpoint will be 1. Turning point मेरा 1 आ गया. I'll simply plug in this value in my composite function. So f of g is a function like this. Sir, if we find it easier, can we just differentiate and equate it to 0? Yeah, you can. It's perfectly fine. बिल्कुल, ठीक है. Sorry, this is a maximum function. Anyway, so f of g is equals to negative 1/4, 1 squared, plus 1/2, 1. So negative 1/4 plus 1/2, I'm getting 1/4. Sorry. So now this value is 1/4, and my range would be all the values beneath this.
So f of g is less than equals to 1 upon 4. Any confusion, class? This is the second type of question which might come in composite function, in which they ask you to find the range. पहले हमने कवर कर लिया कि डोमेन किस तरह रिलेटेड है, तो हमने क्या रिलेशन बनाया, इनर फंक्शन जो इनर फंक्शन का डोमेन है उसी के अंदर अंदर रहता हुआ composite function का डोमेन बनेगा. And if they want you to find the range, you simply use that domain just like I did over here to find the range. ठीक है, एक और एग्जांपल कर लें. ये हमने quadratic कवर कर लिया. If there is any question, please ask me. I'll wait for about 10 seconds. I have 2 queries, I think. Yeah, Ahmed Arun, you are absolutely correct, but it's less than equal, so it's not greater than. Because our function, मैंने क्या लिखा था? The reason, this was the reason I wrote this. With carefully noticing, what type of function do we have? We have a maximum function. That means कि जो turning point की value 1 upon 4 आ रही है, वो less than में जाएगी अब, greater than में नहीं जाएगी. All right? ठीक है अहमद? All right, moving on to the last part. The last, I think हमारी ये worksheet का और है. Do I have more? I don't know, but I can take out more. ठीक है, एक दो मैं निकाल लूंगा अलग से. Different type. अभी हम 2 types कर लिए हम. ठीक है, चलें. Let me tell you इनमें से कौन सा करना है. किस अच्छा आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. So I think we can directly move on to part D. No worries. ठीक है. How have I been doing so far? What function लिखा, एक लिखा, उसका completed square form लिखा, which is x minus 2 whole square negative 1. उसका domain लिखा, x greater than, based on the given value, it is x greater than 5 now. Now I am going to write g of x, which is what? 1 upon x plus 1 for x greater than negative 1. And what do I need to find? gfx. Find an expression for gf. So gf would simply mean I will उठाऊंगा fx को और g की जगह फेंक दूंगा. So 1 upon x minus 2 whole squared negative 1 plus 1. So negative 1 plus 1 गया. 1 upon x negative 2 whole squared. अच्छा. So f of x का domain क्या है? What is the domain of inner function? अच्छा अब मुझे I want you guys to tell me, although मैंने जवाब दे ही दिया है. I want you guys to tell me what needs to be done now. I want to find the range of gf. So what should I do first? सबसे पहले क्या So figure out you करूंगा? plug in the function f into the range of g. Function f into the range. नहीं. So you plug in Function. the domain of f into gf, and then you'd get the domain of it, and then you can get the range. Don't you think I already have the domain of inner function? ये मेरा inner है? No, sir. I mean you put the domain of the inner function into g of x, gf of x, and then you'll Basically, get the range. I use this value 5. And I plug it in. That's what I do actually. ठीक है? मैं यहाँ plug in कर दूंगा 5. 1 upon 5 minus 2 whole squared. So what am I getting? 1 upon 9. So now can someone give me the answer? क्या आंसर होगा मेरा यहाँ पर? Yeah, anyone? I'll wait for about 10 more seconds, I guess. Will anyone give me the answers? Ayan, is this clear? Both Ayan, I have 2. Muhammad Ayan and Ayan. Is this clear? But is this कोई question है? Is there any query? We're doing second type of question. Yeah. No one giving me answers. I want answers. चलो ठीक है, अब इसका आंसर मैं निकालता हूँ. देखिए, now some people might write gf greater than 1 upon 9. Some people might write less than 1 upon 9. I told you again that you should carefully notice the type of function. So now we are dealing with exponential functions. So you should be able to imagine how would the exponential function look like. So we know कि अगर वो x minus 2 है, that means 2 पे एक asymptote बन रहा होगा. और ये squared reciprocal function है, that means इस तरह का होगा. इसका y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस तरह का होगा.
and we want to figure out कि हमारा जो x है वो 5 से greater है. हमारा डोमेन क्या है? x greater than 5. So 5 पे जो वैल्यू आई है that is 1/9. All the remaining values are decreasing towards 0. That means my answer would be GF greater than 0, less than 1/9. Is there anyone who has confusion with this answer? Anyone who has confusion with this answer? Anyone? Ahmed, Amna, Ayan, Daniel, Hiba. Hiba, खास तौर पे आप पता है. Mohammad Ayan, I really want you to answer. Sir, it's clear. Perfect. Rafe? Yes, sir. हाँ भाई, ये टॉपिक बन गया, तुम्हारी क्वीन बन गया चेस की. Yeah, yes, it's quite easy. This topic should be the queen of your chess. Is that how it is? ये चलो knight भी ठीक है. I'll accept it as knight as well. The queen should actually be quadratic. वो हर topic में आ जाता है. Yeah. I would say it's all queen. All right, that's good. Sayyid Mohammad Ayan, are you speaking? अकेले. चलें. Now I have one proposal, which is कि we've done about 6 questions. ठीक है? So either you guys attempt more questions by yourself, and I'm available on WhatsApp with you guys. ठीक है? And right now I do queries, or the other thing is कि I keep on doing questions. I think if I keep on doing that, won't help you a lot. ठीक है? Because I want you guys to think. Wait, sir. Yeah. Sir, can you just explain the shoelace method once more? That Which method? Shoelace method? shoelace, yeah, yes, sir. Yeah, I'll do it. ठीक है. एक shoelace method. अच्छा, पहले मुझे इसके एक वो feedback दे दें, या कोई और सवाल मुझे कोई मिलता है ना, तो मैं एक और सवाल करवा देता हूँ, so that इसको हम बंद करें बिल्कुल. ठीक है? Yes, and this is pretty good. क्योंकि I think इसमें most of the questions you will be able to do. हाँ, जो मैंने शुरू में इस let me go back to this. तो मैंने आपको ये वाली exercise तो नहीं कराई. हाँ, जो मैंने ये acceptable और unacceptable वाली चीज की है ना, तो इसमें there is one type of question जो आपके mock में भी आया था. For example, let me make up a question over here. कि जो red वाला है, that's your domain. जो red वाला है, that's your domain of inner function. और जो blue वाले हैं, वो मैं क्या बना रहा था? Outer function का बना रहा था. ठीक है? ये last वाला आपका this should be blue. Can I change its color? Yeah, blue हो गया. ठीक है? इसमें मैं एक और सवाल बनाना चाह रहा हूँ to cover out one other type of question which is based on this particular concept. ठीक है? So for example, अब मैं एक और domain बना रहा हूँ. Okay. -0.5. Now the question is find the largest value of k that would make my composite function क्या बोलेंगे, क्या word होगा? Like it would make my composite function exist. What would be the maximum value that k can take? Yeah, I want everyone to answer this. What is the maximum value that k can take? Thank you, Ayan, Mohammad Ayan. What is the maximum value that k can take? Again, let me mention this. This is your outer function. No, sorry, this is the composite function. Sorry, let me make this clear. Composite का domain है ये. Composite का domain है. तो mock किसी के पास फोटो है? मेरे पास mock मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, मैंने कहाँ रखा है mock. Anyway, this is the domain of the composite, and this is the domain of inner function. So based on the domain of inner function, what is the largest value k can take? Just by you don't have the functions, you don't have anything, you just know the domains. So please tell me the largest value that k can take. Why aren't you guys answering? मैं mute हुआ हूँ क्या? Mute तो हुआ भाई. जी Ayan, Hiba. Sir, would it be 5? Exactly, yeah, that's correct, absolutely correct. Because we can't go more than 5. क्योंकि अगर हम 5 से बाहर चले जाएंगे तो इनर फंक्शन तो उसको केटर ही नहीं करेगा. जब इनर फंक्शन केटर नहीं करेगा तो कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करेगा? बिकॉज कंपोजिट फंक्शन में the first thing which is happening is the value of x is going into inner function and then it's going into the outer function and coming out as a composite function. So your domain of composite should verify and stay within
inside the domain of inner function. Is that clear? तो ये एक type of question आता है जिसमें वो largest value इस तरह पूछ लेता है आपका, ठीक है? अभी हमने जितने सवाल किए हैं ना, in the first 4 questions उसमें inner function का domain नहीं था. Inner function का domain नहीं था, तो we first figured out the domain of inner function, ठीक है? उसके बाद then automatically we can figure out the domain and range of composite function. ठीक है भाई? There was one particular question, एक question था. Let me see if I can produce it over here. इसमें it's right over here. इसको समझाना बताओ, लग जाएगा बिला. Okay, I'll just give you a question. Okay, I want you guys to do this question on your own. Not right now. You can do it later as well. Okay. अच्छा. The question is that you have f of x. Okay. So f of x equals x minus 2 whole squared plus 3. Okay. X less than 1, domain दे दिया. Function g is 2 upon x minus 1, x greater than 1. आपको क्या करना है? g of x ढूंढना है. Find g of x and range of g of x. That is the question. ठीक है. इसके अलावा let me give you one more question. ये हमने क्लास में तो किए हैं, but still shall we take a photo of the time save my time? या आप लोग screenshot लेके you guys can do this later on. I'll move on to queries then. You already have this as well, I know that. Let's just there you go. This is a good question actually. It covers domain and range of reciprocal functions. Okay, so practice with these 2 questions, I think, and the one that I have done, which will help you quite a lot. Did I or did I not? I have some options in the chat. चलो. Any questions? ये कर लेंगे, खुद ही screenshot ले लें, share it in the group. Screenshot ले लें. I'll move on to the queries now. ठीक है? Ayan, if you have queries, you can send me. 2 students have sent me the queries. I'll check WhatsApp right now. Transformations for trigonometric function when there is a function sine 5x, will the 5 act as a stretch factor or so what you want to know is if you have sine 5x or sine 5x minus 1. Now, can you see that 5 is being multiplied to x? That means this is the horizontal stretch. The stretch factor जो होगा ना आपका, stretch factor होगा 1/5 in x direction. ठीक है Daniel? You have another equation. The equation of a curve is, and the equation of a line is, say this following value of y. It's a good question. Let me see. Even if I ask for it. Okay, for both the curve and the line. I got it. All right, let's do this. Y is equals to 3 cos 2x, and you have y is equals to
5 minus 3x upon pi on 2 pi upon 2 pi. ठीक है, इसको मैंने y को सब्जेक्ट लगा दिया. ठीक है, state the largest value of y for both. तो कर्व की वजह बेटा you have to imagine the curve, it starts and end. ठीक है, मैंने क्या बताया है, जो प्लस माइनस वाली वैल्यू है विच इज 0 राइट नाउ, इससे इतने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, +3 करेंगे तो मैक्सिमम, -3 करेंगे तो मिनिमम, और अदर वे अराउंड इन केस योर फंक्शन इज फ्लिप्ड. सो 0 से 3 ऊपर 3 नीचे. ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई y की फॉर द कर्व इज ग्रेटर देन equals to 3 less than equals to -3. ठीक है, that's one thing. मैं आपके लिए सवाल चेंज कर देता हूँ. 3 cos 2x -2 कर देता हूँ. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, -2 से 3 स्टेप्स ऊपर गया 1 +3, -2 से 3 स्टेप्स नीचे गया, that is -5. That's my maximum and minimum values. अहमद, clear है? Is this clear, Ahmed?